Welcome students. Today we start the new chapters, that is the life process. All of you welcome in my YouTube channels. Today we start the first chapter, that is the life process. Life process means what is the process that is occur in the life we discuss about inside this chapter. Okay, that is clear. Okay. So before we discuss about the life process, first thing, what is the features of life? मेन कैरेक्टर्स क्या है लाइफ? फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट देम. किस बेस पे कहेंगे ऑर्गेनिजम्स आर दैट इज लाइफ? तो इन केस ऑफ लाइफ या इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज द कैरेक्टर डिफरेंट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ देम वी आर से दैट in which such character are present, the organism say life. Okay, just like first one is the digestion, second respiration, third circulation, also known as transportation. Fourth one, excretion. Fifth, reproduction. And sixth one, that is the growth. Okay, this is the main feature of life. A life के main features है. On the basis of them, we are called the organisms are living things or life are present inside them. First thing, what is the digestion? Digestion is a biological process in which that is the breaking down of insoluble complex food material into the simple and soluble form. Okay, we discuss later because that is the different topic that is given in your textbook. एक चैप्टर है एक तरह से, ठीक है, हायर क्लास के लिए, लेकिन आपके लिए भी क्या है, एक टॉपिक है पूरा डाइजेशन, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, वी डिस्कस अबाउट इन केस ऑफ न्यूट्रिशन. सेकंड वन, respiration. What is the respiration? Respiration is a process in which that is the breaking down of food material in the presence of oxygen. They release the energy, and this energy that is used for the different metabolic activities that is occur inside the living organism. This is known as the respirations. Clear? You cannot confuse between the breathing and respirations. कुछ लोग से respiration पूछा जाता है, directly that is say that intake the oxygen and release the carbon dioxide. This is the not respiration. What is this? This is the breathing. Breathing means exchange of gases, means in which that is intake the oxygen and release the carbon dioxide. Okay, but in case of respiration, that is breaking down of food material and release the energy, and this energy that is used for the different metabolic activities that is used for the living organisms. Here, third one is the circulation or transportation. Circulation means that is responsible for the transport of different material which are present inside the bodies. This is also known as the transportation, means transport of material from one place to another. Just like in human body की बात करें या living organism की बात करें, that is the blood and lymph. There is two components are present which are responsible for the transport of material from one place to another. But in case of plant की बात करें, there is the specialized tissue are present, means that is connecting tissue are present which are responsible for the transport of material. You know about them, that is xylem and phloem. Next one is the excretion. Excretion means that is the removal of the waste material from the bodies. बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. In different organisms there are different type of excretory organs are present and different type of excretory product are present. You know about them, there are different type of excretory product, just like urea, uric acids, ammonia. These are different components of excretions.
Okay. Next one is the reproduction. This is very important for the survival of organism on the earth surface. Means that is races are present on the earth surface. Reproduction. Reproduction is a biological process in which that is organism that is give young ones similar to the parent. Okay. और ये आपके एक चैप्टर पढ़ना है इसको ग्रोथ ये दिस इज द मेन फीचर ग्रोथ के लिए क्या कहते हैं दैट इज द ऑर्गेनिज्म जो साइज रेट दैट इज इंक्रीजेस मींस दैट इज द डेवलपमेंट्स की बात करें तो दैट इज इंक्लूड इनसाइड द ग्रोथ इफ देयर आर 6 फीचर आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके और यदि ये सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत मींस दैट इज द ऑर्गेनिज्म इज लाइव क्लियर तो व्हाट इज इसी बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द living and non living ठीक है means in this organism the all six character are present is known as the living organisms और जिसमें एक character present नहीं है is known as the non living that is clear okay the first topic that is in case of life process that is the nutrition Nutrition क्या है? Nutrition is the biological process in which that is the intake the food and utilize them. जो फूड मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका यूटिलाइज करने की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. For the nutrition, there are in case of nutrition there are different components are present. You know about them. There are different components which are present and nutrition के through that is the obtain the energy. उसी एनर्जी का पूरी बॉडी जो है यूटिलाइज करता है डिफरेंट फंक्शन में. ठीक है तो न्यूट्रिएंट के न्यूट्रिशन में एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट क्या है means that different components which are required for the proper growth of the body this is known as the nutrient ठीक है और न्यूट्रिएंट्स हमको कहां से मिलता है थ्रू द फूड तो फूड क्या हो गया आपका न्यूट्रिएंट हो गया and you know about them in case of food that different components are present which are responsible for the provide the different properties they contain just like a food in case of first one is the carbohydrate second one fat third proteins fourth vitamins and fifth one is minerals and water. ठीक है this is the different components of food. Carbohydrate का function क्या है? You know what them? They provide the energy and heat of the bodies. Fat that is the more than means that you say that there is the twice energy and heat produced through the fats. Protein, this is known as the building block materials. This is also responsible for the formation of antibodies. Okay, protein की required ज़्यादा होती है body में. और against the different type of pathogen जब enter करता है body में, मतलब disease causing organism जब enter करता है तो उसके against हमारे body में क्या बनता है? Antibodies. वो इस antibodies को formation में कौन सा है कि आपका proteins होता है. That is clear? Vitamin, this is the small amount means less amount that is required but that is necessary बहुत कम इसकी आवश्यकता है लेकिन ये क्या है necessary है for the digestion of food material as well as that is the use for the complete proper functioning of our bodies that is required the vitamins and minerals ठीक है and water this will maintain the body structure as well as you say that is the maintain the body temperatures ठीक है this is also helpful for the transport of material because you know in case of blood 70% 70 to 90% only the water is present okay means this is responsible for the solubilize of materials clear okay on the basis of nutrient we say that the living organisms are two types one is the autotrophic
and second one heterotrophic. Autotrophic and heterotrophic. What is the autotrophic? Autotrophic means those organisms they make their own food. ठीक है, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं. ऑटोट्रॉपिक दे आर टू टाइप्स. Photoautotropic and second one is the chemoautotrophs. Photoautotrophs means those organisms that make their food in the presence of sunlight. Okay, this is known as the photoautotrophs. For example, plants. और plants में भी आप किस plant को कहोगे? Green plants. ठीक है? Because some plant that is the you know about them variegated leaf that contain the in case of plant, but only the green plant means which contain the only green components, because you know about them green component क्या होता है? Chlorophyll होता है, which are responsible for the absorption of sunlight and carbon dioxide from the environment, which are help in the photosynthesis process. Clear? प्रोटॉन देखो फील्ड में या कहीं भी प्रोटॉन प्लांट देखो तो देयर इज डिफरेंट टाइप कलर्स द लीफ आर प्रेजेंट, लेकिन उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है दिस इज द ओनली फॉर रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. उसके अलावा जो पिंक, येलो, ठीक है, रेड कलर जो अपीयर होते हैं, जो दिखते हैं, वो उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता. दैट इज क्लियर? तो photoautotrophs means those organisms that make their food in the presence of sunlight. For example, green plants. Chemoautotrophs means those organisms that make their food in the presence of inorganic and organic components. जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अपने फूड का फॉर्मेशन करे उसको हम कीमोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, methnotrophic bacteria, which is known as the methanogens. ठीक है, this is a different type of autotrophic organisms, means chemoautotropic organisms. हाइड्रोजन बैक्टीरिया means that is the inorganic components से अपना फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन, सल्फर. मेथनोट्रोपिक बैक्टीरिया मेथनोजेंस इसको बोलते हैं, this is the methane that is required, means inorganic and organic component that is required for their food. ठीक है, या those organisms that is make dependent on the organic and inorganic components for formation their food is known as the chemoautotrophs. और यदि लाइट के थ्रू in the presence of light food का formation करते हैं, so this is known as the autotrophs. That is clear? Okay, second part पे आते हैं इसके heterotrophs. Hetero means different, trophs means dependent. Means heterotrophs means those organisms they cannot make their food for the survive, that is dependent on the another organisms for survive, this is known as the heterotrophs. ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो फॉर फूड के लिए, उसको हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन जस्ट लाइक ए पैरासाइट, सेकंड वन सेप्रोट्रॉप्स, insectivorous, insectivores, and fourth one is photozoic infection. Okay, so heterotrophic nutrition there are different type: parasite, saprotrophic, insectivorous, holozoic. What is the parasites? Those organisms that is dependent on another living organisms. This is known as the parasites. आप क्लियर याद रखिएगा पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप में डिफरेंट क्या है.
क्योंकि यहाँ जितने भी आपको प्रोसेस दिए हैं पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स इंसेक्टिवोरस और होलोजोइको, दे आर डिपेंडेंट टू another organism for their survival. ठीक है, लेकिन हम जो टर्म यूज किए हैं पैरासाइट के लिए मींस दैट इज द डिपेंडेंट ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, means those organisms that is obtain their food from other living organism is known as the parasites. just like अमरबेल है, ओरोबैंकी है, ठीक है, मॉस्किटो है, जू है, ये सब क्या है पैरासाइट्स है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. क्लियर. सेकंड है सेप्रोट्रॉप्स, मींस दोज ऑर्गेनिज्म दैट obtain their food from dead and decaying materials. Dead and decaying materials. So what is difference between the parasite and saprotrophs? That is clear. Parasite में क्या था, कहाँ से वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जो सेप्रोट्रॉप्स है दैट इज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम वेयर, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, मींस ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ओके, इसको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जो फंगस है, बैक्टीरिया है, नॉर्मली यू नो अबाउट देम, दे आर डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स. ये डिकम्पोज करते हैं, वही उसका क्या होता है, फूड होता है. क्लियर. थर्ड वन, इंसेक्टिवोरस प्लांट means such type of organism that is developed in those area the soil they contain less amount of nitrogen. For the fulfill of nitrogen they capture the insect. So this is known as the insectivorous plant. ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट उस एरिया में पाए जाते हैं जहां के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है. उस नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं. ठीक, क्यों? बिकॉज जो इंसेक्ट होता है, जो उसका बॉडी कवर होता है, दिस इज द मेड ऑफ द काइटिनस सब्सटेंसेस. काइटिन का बना होता है, विच इज द वन टाइप ऑफ प्रोटीन. वो भी एक तरह का प्रोटीन है. एंड यू नो अबाउट दैम, प्रोटीन इज फॉर्म थ्रू द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड मींस दे कंटेन द नाइट्रोजन. ओके, तो नाइट्रोजन को फिल करने के लिए वो कैप्चर करते हैं, उसको इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं. क्लियर. इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं. जैसे पिचर प्लांट्स है, ठीक है, नेपेंथिस पिचर प्लांट, ब्लैडर वर्म, ट्रिक्लेरिया, they are different type of insectivorous plant. Clear. Now that is occurring in case of eastern part of the India, means मेघालय, असम रीजन में जाएगा तो वहां पर insectivorous plant आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे. That is clear. Holozoic nutrition means such type of organism that is obtain their food in solid and liquid mediums. जो फूड को सॉलिड और लिक्विड मीडियम में गार्ड करते हैं उसको हम holozoic nutrition बोलते हैं. Just like different type of animals, human beings are also included in them. That is clear. Okay, if you like them, share and subscribe my channels. Next topic we discuss in next slides about we start the first topic, that is the autotrophic, means photosynthesis process. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.